Welcome to Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I am Anubha Rohatgi and with me is my co-anchor Ambrish Saxena. नमस्कार, आर्थिक खबरों के कार्यक्रम मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम देश और विदेश की आर्थिक और व्यापारिक खबरें लेकर हाजिर हैं और हम आपकी प्रमुख खबरों पर आपके साथ चर्चा भी करेंगे और इस खबरों पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार A.K. भट्टाचार्य जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार। और अंग्रेजी में हेडलाइंस के साथ मौजूद है अनुभा रोहतगी। Thank you, Ambrish. Sensex snaps 3-day up move, drops 53 points. Nifty holds above 22,500. Indian exporters showcase sustainable fashion at Dubai's IATF. And crude oil extends more than $1 decline. सेंसेक्स में 3 दिनों से चली आ रही बढ़त का दौर आज थम गया। 53 अंक की गिरावट दर्ज की गई। निफ्टी 22,500 के ऊपर चला गया। दुबई के AITF में भारतीय निर्यातकों ने टिकाऊ फैशन परिधानों का प्रदर्शन किया और कच्चे तेल के मूल्यों में $1 से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। और आज की पहली खबर, घरेलू शेयर बाजारों के बेंचमार्क सेंसेक्स और निफ्टी आज उतार चढ़ाव भरे सत्र में लगभग स्थिर बंद हुए। निफ्टी 22,500 से ऊपर बने रहने में कामयाब रहा। अंत में 30 शेयरों वाला बॉम्बे शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक 53 अंक यानी 0.07% की गिरावट के साथ 73,953 अंकों पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 27 अंक यानी 0.12% की बढ़त के साथ 22,529 अंकों पर बंद हुआ। सेंसेक्स में टाटा स्टील, JSW स्टील, पावर ग्रिड, टेक महिंद्रा और NTPC में तेजी देखी गई। वहीं नेस्ले इंडिया, मारुति और इंडस इंड बैंक उन शेयरों में रहे जिनमें गिरावट दर्ज की गई। BSE के व्यापक बाजार में मिड कैप सेक्टर 0.34% बढ़ा और स्मॉल कैप इंडेक्स 0.18% गिरा। Indian stock market benchmarks, the Sensex and the Nifty 50 ended almost flat today in a volatile session, with Nifty managing to hold above the 22,500 mark. At close, the 30-share BSE benchmark Sensex was down 53 points or 0.07%, settling at 73,953. Meanwhile, NSE Nifty witnessed a gain of 27 points or 0.1% to close at 22,529. From the Sensex basket, Tata Steel, JSW Steel, Power Grid, Tech Mahindra and NTPC were among the major gainers. In contrast, Nestle India, Maruti and IndusInd Bank were among the biggest laggards. In the broader market at the BSE, the mid-cap sector rose 0.34% and the small-cap index declined 0.18%. In sectoral indices at the BSE, metal sector gained 4.08%, utilities sector added 1.99% and the power sector rose 1.96%. On the other hand, information and technology index declined 0.96% and the FMCG cracked 0.51%. और विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया आज 83 रुपए 31 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ। विश्व की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती दर्शाने वाला डॉलर इंडेक्स अंतर्दिवसीय कारोबार में अंतिम समाचार मिलने तक नीचे गिरकर 104.53 पर कारोबार कर रहा था। भट्टाचार्य जी, शेयर बाजार आज नीचे आया कई दिनों के बाद, तो आप क्या, जैसे कि पिछले सत्रों में भी ये
ऊपर नीचे का जो दौर है सेंसेक्स का वो लगातार चल रहा है। तो आपको क्या लग रहा है कि किस तरह की अभी आने वाले समय में हमें सेंसेक्स और निफ्टी में उतार चढ़ाव दिखाई देगा? देखिए, वॉलेटाइल रहा मार्केट आज तो, वॉलेटाइल और सेक्टर स्पेसिफिक भी मार्केट रहा काफी। अगर आप देखें तो एफएमसीजी सेक्टर ने बुरा प्रदर्शन दिखाया है, वैरस मेटल सेक्टर जो है वो बहुत अच्छा किया है। और हमारी जो देश की जो स्टॉक मार्केट है वो काफी इंटरनेशनलाइज्ड मार्केट इन द सेंस दैट वो इनकी जो इंटरनेशनल डेवलपमेंट जो होती है वो स्टॉक मार्केट में ऊपर काफी उनका प्रभाव विस्तार करती है। जैसे आज का जो मेटल स्टॉक में जो इतनी जो तेजी जो 4.8% की जो वृद्धि देख रहे हैं आप, उसका एक ही एक कारण है कि चाइना में जहाँ पे वो हाउसिंग सेक्टर में काफी नरमी थी और चाइना की हाउसिंग सेक्टर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही थी कई महीनों से, और चाइनीज गवर्नमेंट ने एक ऐलान किया है कि वो हाउसिंग सेक्टर में किस तरह से वो एक स्टेबिलिटी लाएंगे जिससे कि वो हाउसिंग डिमांड बढ़े चाइनीज इकोनॉमी में। उसके साथ मेटल सेक्टर का बहुत एक तगड़ा संपर्क है, और मेटल सेक्टर में अगर आप निकल देखें या कॉपर, जिसे हम इकोनॉमी का इंडिकेटर भी मानते हैं, कॉपर की प्राइसेस 11 से 12% एक दिन में बढ़ गई है, निकल की प्राइस बढ़ गई है, और भी बाकी जो इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल्स मेटल्स जो है उनके दाम बढ़ गए हैं। तो उससे जो डोमेस्टिक कंपनियां जो हैं हमारे देश में, उनकी जो मेटल कंपनियां जो हैं उनकी भी जो मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन उनकी, उसमें हम उसका एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस आएगा। तो मैं समझता हूं कि उसी कारण आज मेटल्स में आप इतनी तेजी आप देख रहे हैं, और जो आज थोड़ा जो घटा है वो आपको पिछले 2 दिन में जो चढ़ाव हुआ था उसके संदर्भ में आपको देखना होगा। मुनाफा वसूली भी आपको इसमें थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली जरूर हुआ है, पर मैं मुनाफा वसूली के सिवा वो तो एक ऑब्वियस एक एक्सप्लेनेशन है, पर उसके साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूं कि स्टॉक मार्केट में अंदर काफी अभी भी काफी तेजी यह है कि अगर उस सेक्टर में कुछ अगर प्रॉफिटेबली और मार्जिन इंप्रूवमेंट का स्कोप है, वो सेक्टर अच्छा कर रहा है। You know, we were just talking, in fact, right at the beginning, you mentioned that the FMCG index hasn't done well. So what are the reasons here that we see? Information and technology index, of course, there are various reasons. We have been discussing those. But what about the FMCG index? What are the reasons behind the FMCG sector is directly linked to the demand or the consumption demand in the economy. Now, what we have seen in the last few months is that, and even if you look at the first 3 quarters of GDP numbers and the latest estimate, not from the government but from the private sector, shows that the consumption demand, the demand side of the economy is not going to do very well. Now, this has a direct impact on the FMCG sector because that thrives and relies on demand. Now, clearly, the Indian economy is not running on both its wheels. It is mainly running on its investment wheel. So the consumption wheel or the demand wheel is still not moving as fast as it should be. And that is getting reflected in the FMCG companies because they depend wholly on the way people are consuming goods, short-term goods, things like soap, the day-to-day things that we use. But then, what are the reasons that the consumption is not keeping pace with the supply, or let's say with investment, like you said? Well, there are many reasons. One is that the investments that have been made by the private sector in the last several quarters post-COVID. Now, those investments have kicked in, but the capacity utilization is not very, very high. Now, the capacity utilization is not very high. It has not gone beyond 78 or 79%. Now, it is not very high because the demand in the economy is not keeping pace. And the demand is not taking place is largely because of the uneven growth that has happened. So
a smaller segment of the economy is doing much better, which is contributing to the overall growth. But the consuming segments are not doing that well, in a sense that their purchasing power is not seen a sharp improvement. So they are not coming into the market and buying things. Right. And also you have to remember that this is a lull season, in the sense that everybody is waiting for the monsoon to come, and also elections to results would be coming from on 4th of June. New government will be in place, so there is that sense of holding back on things. We've been talking about the fact that today also we saw that we said that it was a volatile session, and this word volatility has been, so far as the markets are concerned, it's been consistent, it's been there, and analysts are saying it's going to be there for a while now, where Indian markets are concerned. So when we talk of volatility, we also come across a term called India Volatility Index. So for our listeners, for a retail investor, what exactly is this index, and should a retail investor be concerned about it, and how should they navigate it? Well, I think the Indian retail investor must be concerned about it, must be worried about it when the VIX is high. The VIX right now in the last this quarter, and this thing has been almost gone up by around 20% or 25%. So that's a high level of volatility. And what happens is that volatility is certainly a cause for concern, but what is happening in the stock market is that there is volatility, but the stock market is not taken a nosedive. In a sense, the stock market has not really fallen. So there is some comfort that your whatever you have accumulated is not getting wiped out. But you have to be worried about the increases and the sharp decreases in the stock prices on a daily basis. So you have to be really a savvy investor. I would say as long as the VIX remains as high as this, the ordinary retail investor should rather rely on mutual fund based investments, where the investment calls are taken not by the individual investor necessarily, but by trained professionals who are in charge of the mutual funds. जब तक भट्टाचार्य जी अभी इलेक्शन चलता रहेगा तो ये विक्स की परफॉर्मेंस ऐसे ही चलती रहेगी. अगर एकदम सही कहा आपने, ये ऐसे ही चलती रहेगी, और इलेक्शन रिजल्ट्स के ऊपर ये विक्स ऊपर काफी निर्भरशील होगा. किस तरह का इलेक्शन रिजल्ट आता है उसके ऊपर निर्भर करेगा ये विक्स की जो दिशा जो है वो बदलेगी या नहीं बदलेगी. जी, और इसके साथ साथ जो विदेशी निवेशक लगातार भारतीय बाजार से पैसा निकाल रहे हैं, उसका कितना इम्पैक्ट आपको दिखाई देता है? देखिए, एट अ सर्टेन लेवल ये इम्पैक्ट ऐसा नहीं है कि ये पहली बार जो विदेशी निवेशक पैसा निकाल रहे हैं. ये हर इलेक्शन में जो विदेशी निवेशक हैं वो पैसा निकालते हैं, और इस बार भी वही हो रहा है, क्योंकि विदेशी निवेशक हर वक्त जरा बहुत सावधानी पूर्वक अपना पैसा लगाते हैं, और वो इस दाव में वो अपना कोई रिस्क में सम्मुखीन नहीं होना चाहते हैं. पर इसके बावजूद मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आज जो ओवरऑल जो मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो $5 ट्रिलियन के ऊपर चली गई है. मतलब इंडिया का स्टॉक मार्केट जो है वो 5वां सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट बन गया है. तो मैं मतलब मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि विक्स है, इंस्टेबिलिटी है, फॉरेन इन्वेस्टर्स पैसे निकाल रहा है, स्टॉक मार्केट बड़ी नहीं है, पर ओवरऑल जो बेसिक जो स्ट्रेंथ जो है, कोई स्टॉक मार्केट में कोई क्रैश वैश नहीं आया है. And that's also to do with the fact that our DIIs have been, very aggressively purchasing, and they have played a very important role in, like you said, in keeping the market stable. And the basic fundamentals of the economy are holding up. Yes. So the demand is an issue, but investments are taking place. There is a certain lull right now, as you know, in any election season, the lull takes place, and the stock market is just reflecting that.
और चलते हैं एशिया के अन्य बाजारों और यूरोप का हाल भी जान लेते हैं। एशिया के सभी प्रमुख बाजार आज गिरावट के साथ बंद हुए। हांगकांग का हैंग सेंग 0.42%, कोरिया का कोस्पी 0.66% और चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 0.42% फिसला। जापान का निकेई 0.32% तथा सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स 0.19% की गिरावट के साथ बंद हुआ। प्रमुख यूरोपीय बाजार भी गिरावट के बीच व्यापार कर रहे हैं। समाचार लिखे जाने तक फ्रांस का कैक 1%, जर्मनी का डेक्स 0.43% और लंदन का फुट्सी 0.37% गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे। भट्टाचार्य जी, लगभग सभी प्रमुख बाजारों में गिरावट देखी गई। एशिया में कौन से ऐसे कारण हैं जो लगातार सारे बाजारों को नीचे की तरफ ले जा रहे हैं? देखिए, जो एशियन मार्केट, यूरोपियन मार्केट जो है वो इस वक्त जो एक तो है कि जो इन सारे मार्केट में अभी भी जैसे इंडोनेशिया का इलेक्शन है, आपका जो चाइना में जो उनकी अपनी अर्थनीति थोड़ा बहुत जरा डगमगा तो नहीं रही है पर क्राइसिस से गुजर रही है। अगर आप हांगकांग में देखेंगे उसमें भी चाइनीज इकोनॉमी की जो प्रभाव आ रहा है, तो सारे जो इंस्टेबिलिटी और वीकनेसेस जो अर्थनीति में होती हैं उसका प्रभाव ये स्टॉक मार्केट में। और मैं समझता हूं कि ये जो सारे जो मार्केट जो हैं ये मार्केट की साइज तो बड़ी है पर इनकी इकोनॉमी में जो ग्रोथ पोटेंशियल जो है उतना ज़्यादा नहीं है। तो ये इनका डिपेंड करेगा कि किस तरह से अमेरिकन मार्केट, किस तरह से फेड और किस तरह से यूरोपियन सेंट्रल बैंक अपना इंटरेस्ट रेट स्ट्रेटजी को अपनाती है। और इस वक्त जो इन्फ्लेशन मैनेजमेंट सबसे बड़ा उनके लिए रिस्क है, तो जब तक ना इन्फ्लेशन को कंट्रोल में लाया जाए तब तक ये मार्केट इसी तरह सुस्त नजर आएंगे। You're talking about the US markets, and let's have a look at how the markets behaved yesterday. In US stocks, Nasdaq hit a record high yesterday ahead of Nvidia's eagerly anticipated earnings report and amid investors' speculation about the potential interest rate cuts by the Federal Reserve. The Nasdaq Composite climbed 0.65%, the S&P 500 gained 0.09%, and the Dow Jones Industrial Average ended 0.06% higher. Mr. Bhattacharya, you were just now saying that the Asian markets are also being, affected by what's happening in the American markets. There's a lot of anticipation about how the US Fed is going to behave, because there are, expectations that probably the first rate cut is going to happen sometime this year. But there's also the fact that the officials are saying that, till, according to them, or as per their perception, till the inflation is under control, they will not think about it. Yes, there was an early expectation that the Fed will probably give a clearer indication of when it will start the rate decline cycle. But as of now, it seems that the Fed is not convinced that the time has come now. So my sense is that these market responses are slightly premature, and I don't see any early action on the part of the US Fed on even a. There would be a pause that there is no further increase, but surely the rate decline cycle is not here and now. On the contrary, it could be for more and longer. So do you think the fact that even the US is, going to have elections this year, there are presidential elections due this year, probably the US Fed may be taking a cue or maybe waiting for that? Or do you think it has nothing to do with the way the decisions of US Fed have got nothing to do with the presidential elections? Well, it's a good question. Traditionally and historically, the US Fed behaves in a rather independent and purely focused on the market and his own assessment of how the economy is faring. So I would not say that they would be waiting or prolonging their decision on a no rate cut because of the elections. They would rather go by the signals that they are picking up on the trajectory of the economy and whether the growth is going to pick up or not. Right.
Moving on, over 35 Indian apparel exporters, primarily from the MSME segment, are participating in the 17th edition of the International Apparel and Textile Fair (IATF) in Dubai to showcase their sustainable and eco-friendly apparel products. According to the Apparel Export Promotion Council, the Indian exhibitors are aiming to showcase the best of India's apparel designs and styles in line with the latest fashion trends. A wide range of traditional cotton and man-made fiber garments are being displayed with a special focus on sustainability and women entrepreneurship, aligning with the UAE's declaration of 2024 as the Year of Sustainability. With the duty-free access to the UAE market through the Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA), Indian exporters are looking to expand their global reach, particularly in the Middle East and North Africa region. The three-day fair will conclude on May 22nd. India's apparel exports worldwide stood at $16 billion in the previous fiscal year, with exports to the UAE accounting for $983 million, capturing a 15.8% share of the UAE's garment imports. Mr. Bhattacharya, the apparel industry is a very significant industry so far as India's exports are concerned. So, these kind of events, when they take place, how important are they? Well, they are not just important because they account for almost $16 billion of exports, as you said. Yes. But it's also because they are manufacturing, in a sense that they create manufacturing jobs. They create jobs. Yes. And they create jobs among women. And of course men, but Indian apparel industry has got a good gender mix, so that's one. Number two is that this is happening at a time when India has just concluded its UAE free trade agreement. Now what happens is, since it is a fair, so a lot of international buyers come in, and you get the advantage of the UAE free trade tariffs and everything, and you go into their market and your sales get promoted because of the international buyers coming in there. So therefore you are not only promoting your exports to this region, but also you are going to help your overall exports to the other markets, the markets that come and take part in the fair. So it's a good sign, and it will be good to see how this initiative is taken forward. And also this is about the year of sustainability. So therefore, I think it's a good move on the part of the exporters as well as the organizers. So, and you spoke about right now, of course, that we have a comprehensive economic partnership agreement with UAE, and which is why we've got this duty-free access, and which in turn the exporters who are there, they will get more international exposure. So in this context, we are already negotiating a free trade agreement with the EU. We are in the process of negotiating such an agreement with the UK. How important such agreements become then? I mean, undoubtedly, these free trade agreements are very important. Please remember that the World Trading Organization, or which stood for multilateralism, is on the wane, in the sense that the US is not supporting WTO anymore. It is not yet appointed a member of the appellate body. Therefore, the WTO appellate structure is completely non-functional. So India has to look for an alternative access to trade, and one way is to join the trading arrangements of a region, or have free trade agreement with countries or a group of countries. Now, so therefore, getting into the India-UAE free trade or getting into UK free trade are very vital to boosting your exports and domestic manufacturing, which feed into these exports. और यूरोपीय संघ के मंत्रियों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI अधिनियम के लिए सर्वसम्मति से अपनी अंतिम स्वीकृति दे दी है। नए अधिनियम से कानून को लागू करने और रोजगार के क्षेत्र में जोखिमपूर्ण स्थितियों के दौरान नई प्रौद्योगिकी के उपयोग को विनियमित करने में मदद मिलेगी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यूरोपीय संघ को उम्मीद है कि इस कानून से टेक्नोलॉजी का विकास और अन्य जोखिमों से निपटने में सहायता होगी। इसके अलावा AI को विनियमित करने के अंतर्राष्ट्रीय एजेंडा को तय करने में भी मदद मिलेगी।
भट्टाचार्य जी, बहुत ही महत्वपूर्ण है एआई का, जिस तरह से हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण रोल होता जा रहा है। तो ट्रेड के क्षेत्र में भी चूंकि यूरोपीय संघ ने इस कानून को अपनी स्वीकृति दी है, तो इस कानून के बाद आपको क्या लगता है कि किस किस तरह के परिवर्तन हमको व्यापार के क्षेत्र में और दिखाई देंगे? देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बहुत बड़ा एक जो परिवर्तन जो आएगा वो एफिशिएंसी लेवल में, जो चीज हम एक तरह से उसको हम जिसको हम करते थे वो उसको हमें नहीं करना है, उसको उसमें टेक्नोलॉजी का इतना बड़ा प्रभाव आएगा कि हम उसको और भी बढ़िया जल्दी कर सकते हैं। पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कानून बनने का ये भी अर्थ है कि वहाँ पे कानून के साथ साथ एक नियामक संस्था की भी जरूरत होगी, क्योंकि कानून के साथ साथ रेगुलेशन भी बहुत जरूरी है। और मैं ये मानता हूँ कि ये जो कानून जो आया है इससे प्रमोशन भी होगा और प्रोटेक्शन भी मिलना चाहिए, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक नई टेक्नोलॉजी है, उसको हमें रोकना नहीं चाहिए, उसको हमें देखना है हम किस तरह से उसको अपने आप उसको हम एक्सेप्ट करें, उसके पार्टिसिपेट कर सकें और उसकी जो खूबियां हैं, उसकी जो 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 एडवांटेजेस जो हैं उसको हम किस तरह से एक्सप्लॉइट कर सकें। लेकिन जो रिस्क है उसको, और वही चीज ये कानून बताता है कि ये कानून जैसे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से फेक चीज भी आ सकती हैं जी। तो जो उसको आप कैसे रेगुलेट करेंगे? इसका मतलब ये है कि एक इंडिपेंडेंट, स्वाधीन, एम्पावर्ड एक रेगुलेटर, एक नियामक संस्था की जरूरत होगी। वो हमें और हमें भी ये इसके लिए तैयार होना है, क्योंकि जिस तरह से विश्व में इसका एक और यूरोप कर रहा है, इसका मतलब यूरोप बहुत ही इस मामले में बहुत ही डाउटफुल और क्वेश्चनिंग रीजन है। और वो जब उस कानून बना रहा है, इसका मतलब एक बहुत संकेत देता है भारत को भी इसकी तैयारी करनी पड़ेगी। Moving on to commodities, oil prices dropped by more than $1 today, extending losses on investor expectations that lingering US inflation could keep interest rates higher for longer, depressing consumer and industrial demand. The Brent crude oil futures was down by 1.55% to trade at $82.41, and West Texas Intermediate was lower too by 1.68% at $78.46 when reports last came in. Mr. Bhattacharya, we see, of course, a lot of is this to do not only with the US Fed decision, but also with the geopolitical situation. But there is also the fact that the OPEC Plus bloc is going to have its meeting on June 1st, where they're going to decide the strategy for the rest of the year. What are your expectations? You know, let us accept the fact that the oil market globally has undergone a dramatic change ever since the Russian crude came into the market in a big way, particularly after the sanctions were imposed on them. Now today, much of Europe its demands are met through Russian oil, which is getting processed by Indians. Yes. Now, and this market prices that you're talking about, whether it is the Brent crude oil or whether it is the West Texas crude oil prices, actually don't capture what's really happening in the oil market. Right. And today your dependence on the Russian crude oil is as high as around 36%. So therefore, this is a good sign that the oil market has remained stable, and it is good news for India. Yes. और मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में जून के वायदा कारोबार के लिए सोना गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। इस कीमती धातु का मूल्य 272 रुपए यानी 0.37% की गिरावट के साथ 74,095 रुपए प्रति 10 ग्राम पर दर्ज हुआ। जुलाई अनुबंध के लिए चांदी 601 रुपए यानी 0.63% गिरकर 94,666 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर कारोबार कर रही थी। और चलते हैं कार्यक्रम की समाप्ति की ओर। भट्टाचार्य जी, इस कार्यक्रम में भाग लेने या प्रमुख खबरों पर चर्चा करने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद। And before we close, a reminder of the headlines. Sensex snaps 3-day up move, drops 53 points. Nifty holds above 22,500 mark. Indian exporters showcase sustainable fashion at Dubai's IATF, and crude oil extends more than $1 decline. And that's it in this edition of Market Mantra. We will be back tomorrow at the same time. Do join us then. Till then, from the entire team, Namaskar. Market Mantra.